Once again, welcome to the second lecture of day 6. I'm sorry for the delay of about 4 minutes. Those who are watching the from the YouTube, please bear with me for this delay. I had to take a quick shower and then I had to prepare my own tea because my better half was missing. She was managing the upstairs for the children to stay here. That the class 9 camp, offline camp, is beginning from day after tomorrow. So I had to prepare my tea, and then I was unceremoniously sipping my tea with biscuit in front of you. Well, we are joined by Yubraj, by Odia. Let me share my screen. And let me leave all these things. Nuisance. Well, let me तुम्हें अरे चंदन कौन लिखिलानी चंदन गार पकईलानी रे से कौच कहीं आपण करूना डिजेबल करूना आमको आम तो टिके बगुलिया पिला टिके बगुली well V is proportional to I. That is the Ohm's law. The proportionality constant is R. तुम्हें क्विकली लेख नने न लेख अंक करिबा हमें तुम्हें लिखिबो घरे सबु. So resistance of a resistor is V by I. Volt per ampere is equal to ohm. Om Namah Shivaya. Om. It has got a typical symbol. What is that symbol called? Yeah? Kono? Samjit? Sir, omega. Omega. Very good. So that is ohm, and therefore if you keep voltage constant and vary resistors from resistor to resistor, you'll find that there is a no, I'm doing this loop. V is equal to IR, this one. R is constant. So here, if you draw a graph of V versus I, changing the voltage from the source and then measuring the current in the ammeter, you will find there is a linear increase in the plot. I mean, there is a linear change, and the slope of that line is resistance according to this expression. But you reverse this graph, I versus V, then the slope will be 1 upon R, because you know that if V is equal to IR, then I is equal to 1 by R into V. So this is the Y coordinate and this is the X coordinate. Then the slope will be 1 by R. Usually in many books, you find I versus V, not V versus I. But if you find two graphs, same I versus V with two different temperatures, then the higher constant temperature graph will lie lower to the lower temperature graph. Because as the temperature increases, resistance increases. So 1 by R decreases because the slope is 1 by R here. Therefore, you find that this T2 is higher constant temperature than T1. At a constant
voltage, you will find at higher temperature, the resistance will be more, hence current. The resistance will be more, see here. Then current will be less because they are inversely related. Because you are keeping the voltage constant. I'm just trying to extrapolate this, not talking in terms of slope, but talking in terms of the 2 points in the 2 graphs. Voltage have kept constant. You find at higher temperature, the corresponding I is less because I and R, they are inversely related to each other. And at lower temperature, the resistance is low, so current is high. Therefore, the higher temperature graph in the IV, not VI, that will be opposite, will be lying lower than the lower temperature graph. And you know why resistance is directly proportional to temperature for conductors, not for semiconductors. It's the opposite. Therefore, semiconductors are non-ohmic resistors, conductors. Doesn't follow, it's not a straight line. You will be getting a graph like this, a curve. And there are several resistors which can be connected in series, one following the other. This is called the Pankti Sreni Sanjoga. In that, the current will be same throughout, which you can measure by putting an ammeter before the series starts, and after the series ends, you'll find same current entering, same current flowing out. So what's the difference? The difference is the PDs between the 2 terminals of each resistor, they are different. If this is V1, this is V2, V3, V4. So the sum of all these voltages, potential differences, V1 plus V2 plus V3 plus V4, is equal to the voltage which is being supplied by the source. Of course, if you ask me little deeper, I will say it is a terminal voltage which is being supplied by the source of EMF. Because some voltage is being eaten away because due to internal resistance. So for now, we will take the EMF of the cell as the terminal voltage, neglecting the small little voltage which is being eaten away by internal resistance mechanism. We will take in all our sums. I have not included internal resistance and the terminal voltage in our program, although I will give you the materials to study. I have not kept in our examination. Now, for series connection, the equivalent resistance जाको आमे ओडिया रे समतुल्य प्रतिरोध माने एई चारिटा रेजिस्टर जागारे गोटिए सिंगल रेजिस्टर रखिले जेतिकी करंट जाउथिला सीरीज कनेक्शन रे एक्जाक्टली सेतिकी करंट जीवो सेतिकी वोल्टेज रे तेबे सेईटाको कहंती एई चारटार समतुल्य बा equivalent resistance, and it is the sum of the individual resistances. Well, the derivation is very, very easy because this I is constant. IR1 plus IR2 plus IR3 plus IR4 is equal to, the sum of the voltage is equal to, I into the effective resistance or the equivalent resistance. So V remains, V1, V2, V2 remains because now V is, this V is I into the equivalent resistance. As agare gotti resistance adi nabo.
So is equal to यहाँ जगह I sorry yes R1 V1 जगह I R1 I तो समान I R2 I R3 and so on. So I कटिगले अजा खाली रहीगले. So equivalent resistance is a sum of the individual resistances. किंतु parallel connection रे the current is shared. Current is divided according to resistance. More the resistance, less is the current it will draw. So it was asila source of EMF ru ei jo node ru it is separated hegala tinta different current hegala and the sum of this is what we call Kirchhoff's current rule law that any node re the sum of the current is zero. Flowing jetiki asuchi seta dharo I jauchi I1 I2 I3. So I is equal to I1 plus I2 plus I3 or I minus I1 minus I2 minus I3 is equal to 0. Any node re jetiki asuchi setiki jauchi. Total number of total current individual circuit re part circuit रे जो जाउची बा आसुची से दीटा कर सम से सबुडा कर सम 0 किबा टोटल जतिके आसुची सेतिके जाउची. सो एटा आर जदि इफेक्टिव सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जदि हुए ताहले करंट जेहेतु समान अछि हमें सेही भली भाबरे प्रमाण करि परिबा I1 जगह V by R1 V by R2 V by R3 eta V by RQ. So it V कटिगला सेठी I कटुथला एटी V कटिगला. So 1 by equivalent resistance is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. And interestingly, the reciprocal karidav equivalent resistance bhar karibo, it will be found that it is even less than the least resistances out of all the resistors which have been connected in parallel. Samantarala sanjoga. But likhi debo ame anko kariba. Will not write. Just like classroom writing, tuition re karo ba school re karo. Will not be doing that. Will be writing at home. And what is important is will solve many intriguing problems. So I total divided hejibo I1 by I2 is equal to R2 by I1. So I1 R1 is equal to I2 R2. You can prove that because voltage is same. So this is I1 R1 is the same voltage as I2 R2. So I1 by R2 is equal to R2 by R1. That means the current is inversely proportional to resistance. So the resistance adhika hala, se कम current नब. The resistance कम hala, se adhika current नब. The resistance is the current is inversely proportional to the resistance. I1 by I2 is equal to R2 by R1. It a 1 2, it a 2 1. Or I1 R1 is equal to I2 R2 because voltages are same. Voltage is same. Now this is a simple आमे तो हीरो मार्का लोक सबू एबे छोटो अंक गुडाक आमे करिवुनी आमे बड़ अंक करिवु छोटो अंक रे हमर किछि जायस नाही किंतु परीक्षा रे सहज पडिवु तो मु केमती डोंट बी स्केयर्ड दैट मु एकदम पूरा जो जो लेवल जाके डिस्कशन करबी सब गुडाक सेमती पडिवो नो इट्स नॉट दैट तो ए दीटा जेहेतु सीरीज कनेक्शन आको मिसई दबा तो ए दीटार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 612 एवं एटा 6 तेणु आपको जो सर्किट डायग्राम रिड्यूस कर दबा आपको कहते रिडक्शन ऑफ सर्किट डायग्राम से मेथड रे बहुत अंक करा जाए एटा को डिवाइडिंग लाइन कली तो वर्तमान यार इफेक्टिव रेजिस्टेंस हे गला केते 612 612 सीरीज कनेक्शन अछि एटा 6 वर्तमान ए 6 ओम आउ 12 ओम रो पैरेलल कनेक्शन है 1 by 12 plus 1 by 6 3 by 12 उल्टी गला रेसिप्रोकल है गला सो 4 ओम हबो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए दीटा को जदि रिड्यूस करिवो ताले इट विल बी इक्विवेलेंट टू 4 ओम व्हिच इज लोअर देन एनी ऑफ दिस 12 और 6 जहार पैरेलल कनेक्शन हला ताठू भी कम द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किंतु छोटो सापर कमाल अधिका I mean, देखिए तार power generated will be more, so the light will be, glowing more brightly. Brightness will be more if there will be parallel connection of two bulbs, rather than series connection. So that depends on the power that it
generates, or it consumes, or it produces, it uses. Now coming to next question, this is another simple ame ithre now. Well, we are hero marka people. We will not solve such type of problems. ये हमारा जहन में इतना आसानी से घुस जाएगा, तो इसके लिए हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे. अब से हम हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि हिंदी में ज्यादातर हम बात नहीं करते हैं. जो सीबीएसई में पढ़ते हैं उनका ज्यादातर हिंदी में, उनका इंग्लिश अच्छा नहीं है, वो इंग्लिश में अच्छा नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में काफी तेज हैं. वो लोग ज्यादातर हिंदी में बात करते हैं. देखिए, मैं हिंदी बोलता हूं. 3 और 2, 3 और 2 they are connected in series. ताकू ये ताकू ता संगे लागी छी. सेम करंट फ्लोइंग एथरे जा एथरे से. तो आको आगो रिड्यूस कर दवा. ए दीटा रिड्यूस हेले कोन होबो? गोटी हे गला. तार केते हे गला? 3 2 5. तापरे एठी 1 लागी छी आगुरु, रिडक्शन कर देले. तापरे आकु रिड्यूस कर दवा. ए संगे एटा लागी छी, मिसी छी, सीरीज कनेक्शन हे छी 3 2 5. तो ये भी 5 हे गला. तो वर्तमान this circuit is by now reduced to the simpler circuit. 5 1 5 रो parallel connection. So 1/5, 1/1, 1/5, 7/5 तारो रेसिप्रोकल कर देले 5/7. कते कमी गला? 1 रु भी कमी गला. ऑब्वियसली 1 रु कमीबो, कारण गोटे सबुटु छोटोटा 1 अछि, तेनु इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ता छोटो ठारु भी छोटो हबो. इट इज प्रूव्ड. चलो एटा करबा. किए बुझी पारुछ? हाथ टेकिलो, हाथ टेकी दिए ना. कारण मोर गोटे स्मेल अछि ना, मु इट इज ए माइक्रोफोन रे सब मानको सब सुंघुची. तेणु मो पिला मानको मु सुंघुची. तेणु खाली गोटे बा को बता भलिया पचारुची. बा को बता विश्वजीत सी कहबो, ए कोन सर काहे पचारचंदी? मो हाथ फाथ टेकीबिनी. चिन्मय कहबो, कोन से एडा, कोन एडा हमर कोन से एडा म पचारचंदी, आमे काहे हाथ टेकीबु? नाइ मो आई एम किडिंग चिन्मय, you are such a good girl. And so also विश्वजीत. देखो, पी क्यू और ए बी से पचार आग ए बी भितर कह एंड तापर पी क्यू भितर कर. आग ए बी भितर करवा. ए बी भितर ए 3टा जाक सीरीज कनेक्शन होती. सो 3 3 6 3 9 हेगला गोटे, एवं 9 संगे 3 रो पैरेलल कनेक्शन. सो 1/9 1/3, 4/9 उल्टी गले 9/4 हम ए बी भितर. तापर से कहूँ पूरा मूलरू पी टू क्यू जाके. तो आपको आम रिड्यूस कर देथिले. एतक होइथिला केते? 9/4. एतक 9/4 संगे 3 आउ 3 एमाने सीरीज कनेक्शन रे अछथि. एइटा गोटे. हाँ सौम्य, सौम्य किस है पाणिग्राही बाबू, तुमर खोली दौच माइक्रोफोन जिते बेले तुम कथा आम शुभुचु. अच्छा देख, एतक 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 टोटल रो ए बी पॉइंट रे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हला 9/4. 9/4 3 3 एमाने सीरीज कनेक्शन रे अछंती. तो ताकू मिसई देले 33/4 हला ए पी क्यू पॉइंट रे रेजिस्टेंस. बुझिल? आग 3 3 6 3 9 कर देलो. 9 आउ 3 रो पैरेलल कनेक्शन कर देलो. सेटा हे गला ए बी पॉइंट रे आसी गला. एटा रिड्यूस हे गला ए बी पॉइंट को, जोटा हला 9/4 9/4 3 3 एमानकर सीरीज कनेक्शन बारी गला पी क्यू पॉइंट रे. सो इलेक्ट्रिकल वर्क हमें कर साला परे विल एंटर इनटू टफर क्वेश्चंस ऑन. तेरे भी पावर भी आसीबो, ता भितरे सब आसीबो ना. ऑलरेडी हमें जानी छे वर्क डन, जोटा आइसोलेटेड चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रे जहा करंट रे मध्य से वर्क डन बाय the charge is called the work done, and that is minus delta U.
and आमे जेहेतु आमे कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन होची इट इज द पोटेंशियल कमुची सो पोटेंशियल एनर्जी कमुची पोटेंशियल भी कमुची सो डेल्टा v टा नेगेटिव जदि आमे नबा सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हे जिवो सो इट विल बी v into q वर्क डन आउ ते रहिबनी कारण हमर जो कन्वेंशन नै छु करंट इलेक्ट्रिसिटी रे it is the positive charge as if holes are migrating from higher potential to lower potential. So in that respect, delta V ta negative এবং ସେଥିପାଇଁ ଏଠି current electricity ରେ work done ଟା ଏଠି positive ହେଇଯାଉଛି positive ଏଟା delta V ଟାକୁ V ଦଉଛି delta V ଲେଖିବିନି V is the potential difference between 2 points where the charge flowing is the conventional positive charge flowing from higher potential to lower potential, then V into Q. So the product of the potential difference between 2 points and the charge passing through these 2 points will be the amount of electrical work done. And that Q जगह जदि IT put करिवो VIT, V जगह जदि IR put करिवो I square RT. So दीटा formula आइगला लिखि दियो W is equal to VIT or I square RT. So ये जो एनर्जी टा is transformed into several types of energy: heat, light, magnetic, कितने प्रकार रो electrical energy, magnetic, light, heat. किंतु जदि आमे अन्य गुड़ा को neglect करिबा light रू बहुत कम जाए आमे खाली heat energy करिबा आमे एटा को neglect जानी करी करिबा आमे कौन सी magnetic field तैयारी करूने किसी करूने आमे presume करिबा जे all energy work done is converted into heat energy गोटे filament resistor टा heat ही जाउची resistor टा heat ही जाउ जदियो बहुत heat हेले high temperature रे किछि light बाहरिबो बट सेटा को हमें neglect करूचे सो सेही एई equation टा को हमें यूज करिबा to find the heat energy dissipated गोटे इंटरेस्टिंग जिंस हला जोठी मु तुमको टैलेंट सर्च करी यदि रेजिस्टर कांस्टेंट रहिला टाइम थ्रू व्हिच यू आर स्टडिंग द करंट फ्लो और चार्ज फ्लो फिक्स्ड रहिला ए टी एंड आर तबे हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट जदि द्विगुण बढ़िला the heat energy will be increased by 4 times. For that, resistance and time to remain constant. But if you keep I and T constant, same current passes through the same time, then you will find that heat energy is directly proportional to resistance of the resistor. More is the resistance of the resistor, more is the heat dissipated. Now, another interesting is in place of I, you can write V by R. So V square by R square, gote R कटि गला, V square by R square gote R कटि गले, खाली रहिला V square by RT. So this is a very important equation which will be used for power when you remove T, and many times that V square by R will be used for power and we will solve many problems. So for work done, or what we hear the work done is the decrease in potential energy, and that is V square by R into T. एठू आमे बाहर कले I square जगह V by R रो whole square गोटे R कटि गला सो एटा सो एठी देखियो पड़िबो जदि वोल्टेज सोर्स को कांस्टेंट रखिचे टाइम टा को कांस्टेंट रखिचे then देखो जो रेजिस्टेंस टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिला when I and T were constant, when V and T were constant, then heat will be directly proportional to resistance. Their current will change, but heat will be inversely proportional. I'm sorry, more directly heat will be inversely proportional to resistance. It heat energy
produced will be directly proportional to resistance when I and T constant. It is V and T constant inversely proportional to resistance. So that you have to bear in mind. खातारे सब लेखिबो मु इटा जो गुडा फाइल पठेली सब गुडा को आगो खातारे लेखिबो. That will be required for your matric as well as for higher level. And then power. What is the rate of doing work for unit time? तमरो इलेक्ट्रिक बल्ब टा हो कि एंटायर गोटे अप्लायंस हो गोटे केते वर्क डन करूची सो दैट आमे जानिबा तमर क्षमता केते से अप्लायंस रो क्षमता केते से पावर विल टेल यू ब्राइटनेस केते हबो बा केते फंक्शन केते एफिशिएंटली करिवो सेटा गोटे सेकंड रे केते काम करूची दैट विल बी द पावर सो टी टा कटि गले ए आई स्क्वायर आर टी रु ओ इटा सॉरी कैपिटल टी दे देची आई एम सो सॉरी गोटे टाइम टा कटि गले आपनकर रही गला कोन ना खाली आई स्क्वायर आर ए v स्क्वायर बाय आर एटा टी कटि गले v स्क्वायर बाय आर किबा खाली vi जो vi टी आ गुटे को लिखे बोली बोली जो vi टी रु टी टा कटि गले खाली vi सो केते प्रकार रहिलानी जो डेटा देथिबो से अनुसार करिवो आउ एनालिटिकल क्वेश्चन रे कोटा कांस्टेंट देछि कोटा वेरी करछि स्क्वायर टाइम्स की इनवर्सली की कोन देखिबो टिके अच्छा पावर यूनिट हैला कोन ना जूल्स w by t joules per second that is called to watt as you know as you may not know doesn't matter so work w not watt is equal to power into time so watt into second is also joule by second is equal to watt so watt a watt ta confuse करो नहीं से वर्क संगरे मु ताकू एमती कहि दउची एटा स्मॉल w लिखि दउची watt एटा वर्क कैपिटल w so watt into second is equal to joule so usually हमें जो वर्क डन हला केते एनर्जी कंजम्पशन हला मोर जो इलेक्ट्रिक बिल आसे आजिकली नुवा मीटर सब आसिलानी डिजिटल मीटर से जहाँ भी आगुर जो मैनुअल थिला भी सेटा केते एनर्जी कंज्यूम हला पावर देखा जाए आमर एफिशिएंसी ऑफ आवर अप्लायंस र एफिशिएंसी भलो कि खराब किंतु ए बिल टा होची केते एनर्जी तमे कंज्यूम करलो सेटा यूजुअली किलोवाट आवर होची गोटे यूनिट 1 किलोवाट आवर माने किलो माने 1000 वाट आवर ताकू जदी कैलकुलेट करिवो 1000 into you know 3600 1 hour होची गोटे 3600 सो आसीबो एटी 3.6 into 10 to the power 6 जूल एटा एतिकी जूल होची एक्चुअली 1 किलोवाट आवर वाट आवर होची एनर्जी यूनिट व्हिच इज इक्वल टू जूल जूल रो बड़ भाई 1000 जूल वाट सेकंड होची जूल वाट आवर होची हायर यूनिट सो व्हिच इज 1000 जूल सो 1 किलो पुणी आउडे 1000 सो इट गोटे घंटा होची 3600 सेकंड्स सो इथु जना पड़ला जे गोटे किलोवाट आवर टा हमर गोटे यूनिट तार दाम हेलानी 6 टंका केते पैसा तो आमे केते यूनिट कंज्यूम करूछु से अनुसार 6 टंका ना 8 टंका कोन हेलानी से अनुसार से बिल आसुची हमर सा रेटिंग गोटे जेकोनसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गोटे मान अछि सिथरे देइथा है वाटेज एवं वोल्टेज एई वोल्ट रे काम करले एई वाट पावर प्रोड्यूस करिवो बा पावर कंज्यूम करिवो जा भी हो तबे इमीडिएटली एटा देइथिला माने से रेजिस्टेंस जना पड़ियो v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू पावर सो r इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय p सो पावर देइची 500 वाट 220 सो 220 into 220 बाय पावर पावर देइची जो जहा देइथिबो 500 वाट सो इटु जना पड़िबो केते ओम रो रेजिस्टर सेटा जना पड़ जिवो सेठी indirectly से रेजिस्टेंस भी कहि देइची while it is telling you the rating से रेजिस्टर कथा कहि देइची 220 वोल्ट रे चलिबो 500 वाट तार हबो से अप्लायंस रो ताल तार रेजिस्टर केते हबो ना इटु जना पड़ी गला v स्क्वायर बाय r v स्क्वायर बाय p हेले r बाहर छी सो धर गोटे एठी अंक अछि हमें अंक करबा डोरी
अंक आम करवा एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड 500 वाट 220 वोल्ट तार लिखाई से इलेक्ट्रिक केटल रे तार रेटिंग लिखाई 500 वाट 220 से 220 वोल्ट रे ऑपरेट कले से 500 वाट एनर्जी कंज्यूम करिवो से इट इज एनर्जी कहूँ 500 वाट पावर देखो एनर्जी कहूँ इट इज यूज टू हीट वाटर फॉर 30 सेकेंड assuming voltage to be 220 volt calculate the heat produced जोटा दीची आमे रेजिस्टेंस बाहर कर दवा v स्क्वायर बाय मु जोटा कहउथली v स्क्वायर बाय p सो v स्क्वायर एठी p टा वाटेज देची 500 v देची 220 220 into 220 बाय 500 सो रेजिस्टेंस बाहरला एतिकी ताको मु फाइनल करिनी सेतिके रखिछि खाली शून्य शून्यटा काटि देछि तो हीट केते प्रोड्यूस होला ता v स्क्वायर बाय r into t जोटा तुमको आखुर बाहरला से v स्क्वायर r टा जान नथिले आमे सो v स्क्वायर बाय r एटा v स्क्वायर बाय p करके r जानले तो बर्तन v स्क्वायर बाय r into t टाइम टा देछि से 30 सेकंड सो पुनी v स्क्वायर एटा कटि कटि गला 5 टा नेला ऊपर को सो 15 किलो जूल एटा कोटा ऑर्नामेंटली प्रोड्यूस 15 किलो जूल ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हला सही पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक केटल रे 30 सेकेंड व्यवहार कले किंबा तुम आई भी बाहर कर पारथां तो वोल्टेज देइछि एवं रेजिस्टेंस तो भारी गलानी तार ये रु रेटिंग रु रेजिस्टेंस भारी गलानी सो v बाय r कर देले आई भारी गला देन यू कैन यूज VIT प्रिंसिपल और I स्क्वायर RT प्रिंसिपल जोटा कले भी तुम एका जिनस पाइ सेमती आ गोटे देख hello and welcome those who are watching in the YouTube directly. It's I'm marking many are watching afterwards and a Mox is a doctor my ex student who is now doctoring the first year of MBBS. Hello Mox. So it would go the rate of electricity in town supply is 3 टंका हे ए को काळर अंक पर यूनिट छी बर्तमान 6 टंका तो 15 पैसा तो आमे दउथुलु माने आमे नउथुलु हम भड़ा घर दउथले किंतु ये पुराना अंक को मु कॉपी पेस्ट करछि से अनुसार करबा 3 टंका हेले तो हाँ फ्री बरंग हे गले बरंग भलो हम केजरीवाल जेमति फ्री करथिले हमर जेमति कोन हबो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग ए 80 वाट फैन गोटे खाली फैन तार वाटेज होची 80 वाट फैन फॉर 10 आवर्स ए डे गोटे घंटा रे 10 घंटा खरा दिन रे लगेइछ फॉर द होल मंथ ऑफ जुलाई तेणु तुम्हें आग एनर्जी पावर इंटू टाइम 80 इंटू 10 घंटा को सेकेंड कले पुणी जुलाई मास हूँ 31 जनवरी आम एमती करू पिला बेले जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून जुलाई जोटा ढेमा ही 31 जोटा गात होती 30 अवश्य फेब्रुआरी तो आम जानी 28 कि 29 4 वर्ष लिप ईयर आसे एमती आम पिला बेले को मैंने एमती एमती करके शिखिच कहल देखा पिला बेले हाथ टेकिल जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर समस्ते हाथ टेकिले हैंड्स डाउन सो 31 रे गुणा हला तो टोटल हला एटा कौन हला ना जूल को आसिला किंतु आमे किलोवाट रे कन्वर्ट करबा किलोवाट आवर रे आई एम सॉरी किलोवाट आवर रे सो गोटे किलोवाट आवर आमे जानिचे 3.6 into 10 to the 6 जूल सो सांगे सांग ताको किलोवाट आवर रे कन्वर्ट कले कारण से कहूची टेक 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक माने इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 यूनिट जोड़ा से माने ये करंती जो कंपनी हमको
किए दौची गोटे आजिकल टीडी 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 टाटा से कंपनी धर गोटे यूनिट हूँ 1 किलोवाट आवर सो गोटे यूनिट पिछा 3 टका नुह 6 टका 7 टका है सो जदि आम जूल टाकू वाट सेकेंड जूलटा हूँ वाट सेकेंड ताकू आम देखो किलोवाट आवर करवा आम जाने 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ हरिदेले से किलोवाट आवर हो गला बाहरला 24.8 किलोवाट आवर से गोटे किलोवाट आवर को जदि 3 टंका ताहले आमे कंज्यूम से कला से फैन टा कंज्यूम कला एति किलोवाट आवर तो से फैन पाई आमे टंका देले एटा होची आईएनआर रू 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 274.4 टंका आमे दबा पड़ला गोटे फैन पिछा किंतु एक्चुअली 6 करदेले आर आउ दिगुणा 500 टंका ऊपर गोटे फैन जदि 8 घंटा किए चलेब ताले केतेटा फैन आमे चलाउचे कौन अवस्था हमर होउचे अरे मोक्स कौन लिखले छी 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 okay brightness is directly proportional to power not to any other thing voltage नुहे कि ये नुहे so series connection कले दीटा bulb they will be appearing dimmer brightness कमी जीवो compared to when you put them under series connection एवं जेतेबेले तमे सीरीज कनेक्शन करिथिबो सेतेबेले तार दीटा भितरु धर दीटा नबा द लोअर वाटेज जोटा तार क्षमता कम सेटा विल ग्लो ब्राइटर दीटा जाक डिमर हेबे कंपेयर्ड टू पैरेलल कि ए दीटा भितरे डिमर के जळिबो जोटा हायर वाटेज ता देन द लोअर वाटेज किंतु पैरेलल कनेक्शन रे एमानकर दीटा जाक ठारू अधिका ब्राइटर मिलिबो आमे कैलकुलेट करबा तार पावर अधिका हबो किंतु एतरे हायर वाटेज ता कंपैरेटिवली विल ग्लो नुहे ग्लो ब्राइटर सेठी लोअर वाटेज ता सीरीज कनेक्शन रे विल ग्लो ब्राइटर एटी हायर वाटेज ता विल ग्लो ब्राइटर इन पैरेलल कनेक्शन एंड चिन्मय पंडा कौन तुम्हें कल तुम्हें खोली दे कहीदेल तुम कथा शुभिगला so between series and parallel will be brighter than series so let us solve this problem एटा हमें करिवा तुम्हें एटा गोटे करिवा हमें An electric bulb rates to 220 volt and 60 watt is connected in series with another electric bulb rated 220 40. The combination is connected across 220 volt source of EMF. Which bulb will glow brighter? If they will be joining in parallel, then which one will glow brighter? Support with calculations of power. करो देखिए देख साथी करवा समय बर्बाद करवानी धर यहाँ गोटे
बल्ब एटा गोटे बल्ब एटा होची 60 वाट 220 वोल्ट अंडर रे एटा 40 वाट आउ से 220 वोल्ट अंडर रे एटा कनेक्टेड हेची 220 वोल्ट सोर्स तबे आमे इंडिविजुअली बाहर करिवा पावर केते आर पावर केते आर पावर केते जार पावर अधिका रिलेटिवली सीए अधिका ब्राइटली जळिबो अच्छा संगे संग यार रेजिस्टेंस बाहर कर दो एटा धरो R1 एटा R2 सो R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P हमें करथिले V स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू P सो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P सो 220 into 220 बाय पावर अच्छे 60 वाट केते बाहरला शून्य शून्य कटिला ए जहा गोटे हबो कोन 220 into 22 by 6 22 रे तो किसी छिड़ुनी तो कौन हबो कोन केते बाहरला सर 806.66 एतिक ओम बाहरला तेणु एटा चल बाहर करिवा आर R2 टा इज इक्वल टू सेई 220 into 220 by 40 वाट तेणु एठी केते बाहरला समय 10 पाणिग्राही बाबू केते बाहरला सर 1210 वाला 1200 सर 1210 एतिक ओम बाहरला बस तो वर्तमान करेंट केते आसुची ताले बाहर कर दबा दीटा को टोटल केते हला इफेक्टिव बा ये रेजिस्टेंस टा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होची 1210 जुक्त 806.6 केते हला 6 को 6 1 8 2 10 1 1 2 2016.6 तबे करेंट केते जाउची सो आई इज इक्वल टू V by R 220 by effective resistance होची 2016.6 केते एम्पियर जाउची देखिलो टिके मोर मिश्रण ठीक अछि तो मिश्रण 0.109 0.109 एम्पियर करंट जाउची तो बर्तन इंडिविजुअली R1 रे पावर बाहर करिया केते ना कोड I स्क्वायर R केते समय जाउची से कहिछि ना नहीं नहीं हमें पावर नुहे हाँ पावर बाहर करिवा पावर तो पावर तो देइछि आमे पावर तो 60 वाट देइछि आमे कौन बाहर करिवा Sir, से बताइए which one will glow brighter? The resistance total दीटा कर बाहर रेजिस्टेंस से बाहर कले इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बाहर कले से बताइए कोटा सो आई स्क्वायर आर टा बाहर करिवा पावर टा बाहर करिवा आई स्क्वायर आर टीटा तो कटि जीवो ना ये जो 60 वाट लिखा जाइछि सेटा सिना एटा लिखा जाइछि 220 वोल्ट रे काम कले 60 वाट से दबो कि प्रकृति कोन सेति दउ जेबार सीरीज कनेक्शन हेछि ये वोल्टेज टा बांटी ही जाउछि अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस यू नो वोल्टेज इज बीइंग शेयर्ड V1 plus V2 इज इक्वल टू 220 ये कम वोल्टेज पाउछि तेणु वर्तमान यार फ्रेश पावर एक्चुअली केते से रियल जगौछि रेटिंग इज नॉट द एक्चुअल पावर इट इज सप्लाइंग सो आई स्क्वायर आर होची 0.109 रो स्क्वायर इंटू आर होची 806
कल देखिए 0.109 स्क्वायर इंटू 800 इंटू 806.6 एटी केते वाट पावर एटा वाट बाहरिबो पावर माने एसआई 9.583 watt. केते 9.583. 9.58 एतिकी वाट बाहरिला सेटा चलो बाहर करिवा आरोटा दैट इज इक्वल टू एटा P1 P2 टा एठी करूची इज इक्वल टू सेई आईटा तो समान 0.109 रो स्क्वायर इंटू तार आर होची केते बाहर थिला ना 1000 सॉरी 1210 इंटू 1210 कल केते पावर सर 14.376 तबे एबे देखिलो तो एबे देखिलो कि नहीं एतिकी वाट तो देखिलो कि आर वाटेज थिला जो रेटिंग रो वाटेज थिला 40 वाट वाटेज टा एक्चुअली पावर से 40 देखौनी एक्चुअल देखौची 14.37 और रेटिंग टा 40 थाने से v स्क्वायर बाय p को हरिया पई से रेजिस्टेंस बाहर करिया पे रेटिंग टा दिया था किंतु प्रकृत पावर इट इज यू नो प्रोड्यूसिंग और गिविंग is 14.37 eta 9.48 तो लोअर वाटेज बल्ब इज शोइंग मोर ब्राइटनेस ब्राइटर जळिबो कंपैरेटिवली एटा 60 वाट रो बल्ब विल बी डिमर कारण तार एक्चुअल वाटेज इज 9.58 बुझिलो एटा डिमर जळिबो एटा ब्राइटर जळिबो के बुझिला देखो किंतु सेटा पैरेलल कनेक्शन करिकी कैलकुलेट करिवा उभय उभय जाक उभय जाकटू अधिका बाहर किंतु तांको भितरु जोटा हायर वाटेज सेटा हायर बाहर करिवा चलो सेटा को आमे करिवा गोटे अंक नेलेनी माने ताकू छाड़ीबानी सेई चलो आमे पैरेलल कनेक्शन करिवा यू नो ए जो वायर गुड़ाक तार मध्य रेजिस्टेंस अच्छी बट इट इज टेकन टू बी नेग्लिजिबल मोटा तार रे करा जाए आमे आउ टिके परे पढ़िबा मोटे बढ़िले रेजिस्टेंस कमी जाए सो द कनेक्टिंग वायर रेजिस्टर को जे कनेक्ट करूची खाली कंडक्टिंग कंडक्टिंग करूची कंडक्टेंस तार बहुत अधिका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ताकू जीरो बिली बाबू रेजिस्टर जोटा नौ सेटा ही ये धर जो गोटे गोटे अच्छी फिलामेंट निया गला सेटा ही रेजिस्टेंस अधिका सो इटा गोटे आ गोटे बल्ब लगा हला इटा ताकू से 220 वोल्ट दिया गला एटा धरो एटा 60 वाट 60 वाट 222 वोल्ट एटा 40 वाट 222 वोल्ट ऑलरेडी हमें बाहर कर देचु तार रेजिस्टेंस टा ऑलरेडी बाहर ची 806.6 एटा 1210 बाहर ची वर्तमान चलो आर पैरेलल कनेक्शन करिवा 1/806.6 प्लस 1/1210.10 इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट लसा को फसा को नेकरी रेसिप्रोकल करिकरी मते आर इक्विवेलेंट बाहर कलो केते हबो लसा को नियो मिसाओ तापरे रेसिप्रोकल करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते हबो बाहर करो समतुल्य प्रतिरोध पायो जा मैंने पायो जी मैंने राम रतन घन पायो पायो जी 0.0 0.2. 0 पॉइंट
0020 एते रेसिप्रोकल नहीं न कि एते कम कौन बाहर लाम ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 0.0020 0.0020 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ केते 20 तापर किछि नहीं 66 ଅଛି ସାର୍। ଆଉ ତିନିଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ ନେଲେ 206 ନେଲେ ओके तो वर्तमान आमे जेहेतु एमाने एंजॉय करूछन्ति 220 वोल्ट ताहले देखिवा आइदर v स्क्वायर बाय r करिवा v स्क्वायर बाय r सर एटा करिवार किछि नथिला एटा बाहर करिवार किछि कारण नथिला कारण भी नाही सर सेटा आर इक्यू न सेटा 1 बाय आर इक्यू कोडा 1 बाय r से जो 0.0020 हाँ सेटा तो मु भाबुची 1 बाय r ताको रेसिप्रोकल करी कहबा को गधा गुडाक 500 मु बारंबार पचारुची एटा कोन रेसिप्रोकल करी करछ ए विस्मय को हाँ सर किंतु बालिकाटी कहूची पायोजना किए से कहूची नाइ सेटा रेसिप 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होची 0.00206 आज्ञा सर ताल तो रेसिप्रोकल करी कि को केते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहरियो 485.83 सर 483.97 ताको रेसिप्रोकल करबो ना अब सेटा दरकार नै बेकार मु काई तुमको बेकार समय नष्ट कली दरकार नै कारण आमे जेहेतु एटा पैरेलल कनेक्शन रे अछि वोल्ट अक्रॉस दिस वोल्टेज इज 220 ये भी एंजॉय करूची 220 ये भी एंजॉय करूची 220 सो पावर होची v स्क्वायर बाय r r तो ऑलरेडी बाहर छी सो 220 into 220 बाई 806.6 केते बाहरला कहलो मु बेकार तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रे मतई देली सर 60.006 केते 50 और 60.004 हाँ ताला 60 आओ 00 को काई करिया 60 ता माने 60 वाटेज से एक्चुअली देखो जे देखिबोनी कि अरे हे हमें केडे मूर्ख दी जन जगह पर एका वोल्टेज यूज करूछंती केडे मूर्ख तेणु 60 वाटेज टार अधिका जहाँ जेहेतु वाटेज अधिका देखो गोटे बेकार कैलकुलेशन करुचे सेठी सिना वोल्टेज सिना शेयर्ड हो जाउथला बोली एठी तो वोल्टेज शेयरिंग होनी पुणी नाकु को एमती नसी कि नाकु को एमती छोइलेनी हो कलेनी तो कलेनी ओटे P2 टा बाहर करिया पाई एटा फटी बारिबो कोन छी छी हमें एडे बोका सो 220 into 220 बाई 1210 से फटी बारिबो जीवो कोन पूरा एका अरे सेठी वोल्टेज अलगा चेंज हो जाउथला सीरीज कनेक्शन रे वोल्टेज अलगा लगा तेणु करी हमको पावर न्यू पावर बाहर करियो पड़ला और एल्स इंडिविजुअल वोल्टेज यदि बाहर करथांते v स्क्वायर बाय r प्रिंसिपल रे से बाहर थांता एटा केते बाहरियो से 40 पाका पाके बाहरियो जीवो कोड हमें गोटे एडे भुक्का छी सर 40 से जिनस परा कले सो एटी देखिले 60 वाट बल्ब टा इज ब्राइटर एटा डिमर जोटा हायर वाटेज इज ब्राइटर एटा डिमर किंतु दीटा जाक 60 40 इज मच ग्रेटर देन 9.58 एंड 14.37 सो पैरेलल कनेक्शन कले दीटा जाकर ब्राइटनेस बढ़ी जीवो सेही एका पावर वाटेज रो बल्ब एवं सेही एका वाटेज रो बल्ब को सीरीज कनेक्शन कले दीटा जाकर कमी जीवो किंतु दी जन को भितर कंपैरिजन कले सेटा लोअर वाटेज टा अधिका पावर अधिका ब्राइटनेस रे जळिवो एटा एज यूजुअल हायर वाटेज टा तार जेतिक वाटेज तो रहिबो आ कोन so it will be glowing more bright now we are going to another aspect ये आउ गोटे अच्छी तुम करदो ये किसी नुह ये बायात का खेल अच्छा जो बाहित बेग तार मु कैलकुलेशन देखेनी
तार खाली लिखी जो ड्रिफ्ट स्पीड टा केते कम कैलकुलेशन गोटे फाइल तुमको दे देबी ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू I by NAQ where I is the current in ampere N is the number of free electrons per unit volume 1 meter cube रे केते free electrons अछि सेटा हमर केमिस्ट्री पाठ लागिवो टिके को मेटल तार वैलेंस इलेक्ट्रॉन नवाक पड़ियो कॉपर नेले गोटे नवाक पड़ियो कॉपर यू नो पर जानिबो इट विल बी 4s1 3d10 सो 4s1 से गोटे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नवाक पड़ियो पर एटम सो ए होची क्रॉस सेक्शनल एरिया इन मीटर स्क्वायर ए q the charge of the electron 1.6 out to 10 to the minus 19 तो एटा को कैलकुलेट करिकरी हमें बाहर कलु कॉपर रो ड्रिफ्ट स्पीड होची मात्र 0.0234 into कुछ माहिती कि मिलीमीटर पर सेकंड इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 5 मीटर पर सेकंड whereas फर्मी स्पीड मजा जिनस कोन खाली कंडक्टर टा ताको पीडी रे जॉइन करिन जॉइन करले गोटे डायरेक्शन रे ड्रिफ्ट करिवे करंट फ्लो हबो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करिवे डायरेक्शन रे करंट डायरेक्शन ए डायरेक्शन रे ओके जेतेबेले कनेक्शन करि नथिलो ईएमएफ संगरे बैटरी संगरे सेतेबेले तांको स्पीड थिला ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड 10 to the power 6 nearly 200 times less than the velocity of light because that was the Fermi force या न्यूक्लियस ताकू तार फ्री इलेक्ट्रॉन को टाणुची ता न्यूक्लियस ता फर्मी इलेक्ट्रॉन को टाणुची सो एते जोरे से माने दे आर यू नो मूविंग इन अ रैंडम मैनर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस किंतु फर्मी फोर्स टा एते स्ट्रांग तमे जो वोल्टेज अप्लाई करलो ताकू ओवरकम करि पारिबनी फुल्ली ओवरकम करि पारिबनी ए जो इलेक्ट्रिक फोर्स पडिबो ता ऊपर ड्यू टू द पीडी जो इलेक्ट्रिक फोर्स पडिबो दैट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीटली ओवरकम द फर्मी फोर्स सो जो टिके रही जीवो दैट इज अ वेरी मिनिस्क्यूल स्मॉल अमाउंट एक्सेस रही जीवो सेति पई स्पीड टार बहुत कम किंतु एते स्पीडली लाइट स्विच टाको ऑन कला माने लाइट जळिला जस्ट लाइक दिस स्पीड ऑफ लाइट भलिया गोटे फ्लैश रे हे जाउची तार कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स माने एते थांती से ताको ता पिठी को मारला से ड्रिफ्ट पसे करू डेरी रे ताको टिके पेल देला ताको टिके पुश कर देला तो पुश एते स्पीडली पुश करंती से लाइट रो स्पीड भलिया से लास्ट एंड रे जोठी कैथोड रु एनोड पर्यंत एनोड पाखरे जो फ्री इलेक्ट्रॉन थी से पुश दे जीवो ये ताको पुश कला सेते गल कैथोड आडू एनोड को हे जीवो जे इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई आखी पिछुला के सेठी तने कनेक्शन हे गला सर्किट क्लोज हे गला इलेक्ट्रॉन टा माडो करी गला कोठी ना से लास्ट इलेक्ट्रॉन टा चली गला कोठी ना एनोड भीतर पसी गला चलला गाड़ी सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कमाल से माने एते डेंसिटी एते तकर अधिका फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान का डेंसिटी इन कंडक्टर्स सो ठेला ठेली रे सो द एनर्जी इज बीइंग प्रोपगेटेड सो फास्ट लाइक द velocity of light but actual drift speed as you know is so low now it has non-ohmic resistor I by V graph is not a straight line like semiconductors manakara ketaka filament lamp manakara that's non-ohmic so when Ohm's law will not be applicable eita good important jinso what are the factors which adhari gote anko kariba एथरे मु 2-3 टा अंक पकेइछि एते गुणा बढ़िले सेटा केते गुणा बढ़िबो सो सेटा टिके जुडिशियसली देखियो पड़ियो तो गोटे यूनिफॉर्म डायमेंशन रो गोटे रेजिस्टर फॉर एग्जांपल सिलिंड्रिकल गोटे तार टू बी कंसीडर्ड एज ए सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री सिलिंडर रो वॉल्यूम टा कोन ना तार प्रस्थच्छेदर क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर इनटू लेंथ दैट इज द वॉल्यूम जो मेथड रे मु बाहित वेग बा ड्रिफ्ट स्पीड टा बाहर कराई गोटे मीटर क्यूब रे केतेटा फ्री इलेक्ट्रॉन अछि मोल कांसेप्ट टिके लागिछि एवं ता भितरे आमे बाहर करछु मु से फाइल टा देबी मु ड्रिफ्ट स्पीड रे रखिनी सो एटा आमे हायर लेवल रे पढू एटा होची तम लेवल रे r is equal to resistance is equal to is directly proportional to the length of the conducting wire L inversely proportional to प्रस्थच्छेदर क्षेत्रफल area of cross section and the proportionality constant which is fixed for every resistor
It varies from metal to metal to metal to metal to any other conductor or any other resistor in fact. Rho. Rho is called the resistivity, प्रतिरोधिता. आगुर ताकू कहउतला specific resistance बा विशिष्ट प्रतिरोध. आजकली उठे देलानी IUPAP has deleted the term specific resistance or विशिष्ट प्रतिरोध ता जगह रे प्रतिरोधिता resistivity. आर हला प्रतिरोध ओम और रो हला resistivity. तार यूनिट कौन होबो ना ओम. एठी एठी धर मीटर एठी मीटर स्क्वायर. सो गोटे मीटर कटि गला मीटर गोटे तळे रहिला से ओम संगे गुणा हला. सो ओम इनटू मीटर इज द यूनिट ऑफ रो. सो रो रो यूनिट हबो ओम इनटू मीटर. आमे केमिस्ट्री बेले बेले खिचडी यूज करू ओम इनटू सेंटीमीटर भी यूज करू डाटा अनुसार. किंतु प्योर एसआई रे एटा ओम इनटू मीटर. सो ए ग्राफटा तो ऑलरेडी आमे जानिचे. सो एटा आमे हायर लेवल रे कोन कंडक्टेंस जते पढो ताकू रेसिप्रोकल कर दो. सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. सो दैट reciprocal of resistivity is called conductivity kappa, and L by A voltage A by L. So we will not talk about that. Conductance ro unit आजकल है साइमन एस. आगुरु थिला ओम इनवर्स और ताकू कहउतला मोह मोह माया की छोड़ दे दुनिया. तो वर्तमान आजकल है साइमन. एटा तो हरे तेणु आर काप्पा हूँ कंडक्टिविटी लिखा है कंडक्टिविटी. तार यूनिट हूँ कौन ओम मीटर इनवर्स. ताकू मार गुली. तो यहाँ गोटे छोट अंक देख तापर आम अंक बड़ अंक करवा. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर. तने एल टा देछि 100 मीटर लॉन्ग हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे देछि. बेले बेले डायमीटर देई थाए ताको रेडियस करके पाई आर स्क्वायर करी करिया पड़िबो. Because you have to believe the wire to be cylindrical in nature. I mean the cross section is circular in nature. मो वॉल्यूम को था कहउतली. क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर इन नेचर. सो पाई आर स्क्वायर करिया पड़िबो. सो सी दे दी क्रॉस सेक्शनल एरिया होची 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर. इफ द रेजिस्टिविटी रो ऑफ कॉपर सब मेटल मान को रेजिस्टिविटी इज फिक्स्ड is 1.72 into 10 to the minus 8 ohm meter. Express your answer in milli ohm. रेजिस्टेंस केते तो रो देछि रेजिस्टिविटी एतिकी आ लेंथ है 100 मीटर. एटा को खाली मिलीमीटर टा होछि 10 to the minus 3 मीटर तार स्क्वायर पुणी मिलीमीटर रो स्क्वायर. गोटे मिलीमीटर जगह रे 10 to the minus 3 मीटर लिखली एवं तार स्क्वायर कली. हिसाब कला को बाहरला 0.688 ओम. तेणु ओम ताको मिली ओम करिया गले 1000 रे गुणिया पड़िबो. मिली is a lower unit, smaller unit than non-milli. So 1000 गुणिले 688 मिली ओम हबो से रेजिस्टर जहार लेंथ 100 मीटर जहार क्रॉस सेक्शनल एरिया होची 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर एंड से कॉपर वायर रो रेजिस्टिविटी होची एतिकी. बंधुगण तुमे भाबिलो एटा सरी गला सरीनी. So factors which are affecting resistance is the nature of the conducting material. Copper, silver, gold, ये graphite समस्त अलग अलग नेचर ऊपर डिपेंड करे कि बेसी फ्री इलेक्ट्रॉन दे पारिबो. तेबं तापर लेंथ ऊपर एई जिंसटा हमें ऑलरेडी रूल कर सरे. लेंथ रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रस्थच्छेदर क्षेत्रफल संगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एंड एटा तो जानिचो यू नो दैट इज ओम्स लॉ जानिचो. सो एटा ऑलरेडी हमें पढ़ी सारे एटा सब पढ़ी सारे. आम बाएं हाथ का खेल हो गला. एटा सब हमें जानी सारे. एटा कौन एटा कथा एटा कर सारे. एटा कर सारे. एटा तो मिली होम एटा गोटे आउ गोटे कौन थिला कि एटा कौन एमती हो गला से जिनस तो सेठी कौन अलग है सेठी कौन अलग है एठी कौन अलग है आम कोठी गोटे देखौथिली मु एठी कौन अलग है एका अंक नुह कि कैलकुलेशन कौन अलग है
ओ सेटा 1 मीटर थिला ता लेंथ सेठी से लेंथ केते देइथिला देखिलो सेठी 100 मीटर 100 मीटर तेणु से आंसर बाहर से छाड़ ये जिनस तो आम जाचु टेम्परेचर ऊपर जो प्रभावटा कौन पाई टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस बढ़े कंडक्टेंस कमे से जिनस आम जाचु आई बाई भी रे हायर टेम्परेचर ग्राफटा तले रहिबो से कथा भी आम जाचु एक आम कहीचे देख सबुठ हाईएस्ट यू नो कंडक्टिविटी दैट इज साइमन ओम इनवर्स ना हूँ साइमन आजकल कई ओम इनवर्स कहना साइमन मीटर इनवर्स तो रेजिस्टेंस आर बहुत कम होला बेलू कंडक्टेंस बहुत अधिका तेणु युवाक सब जो गुड़ाकर कंडक्टिविटी 100 रु अधिका से माने गुड कंडक्टर्स जो माने 100 रु कम कंडक्टेंस रेजिस्टेंस बहुत अधिका देख रेजिस्टेंस यू नो डायमंड या रेजिस्टेंस केते अधिका इवन सेमीकंडक्टर्स लाइक जर्मेनियम सिलिकॉन रो रेजिस्टेंस सिलिकॉन रो रेजिस्टेंस बहुत अधिका रेजिस्टिविटी अधिका हेले रेजिस्टेंस अधिका हेला एक्चुअली रेजिस्टिविटी कौन इट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर विथ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ये सेटा होची रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 1 मीटर लेंथ तमाने यूनिट वॉल्यूम हेलानी ऑफ द कंडक्टर सीटा कथा तेणु आमर ये इलेक्ट्रिसिटी रे रेजिस्टर नौ जार रेजिस्टेंस अधिका कंडक्टेंस कम दरकार जो गुड़ाक कनेक्टिंग वायर से कंडक्टेंस अधिका रेजिस्टेंस बहुत कम तो से गुड़ाक पावर किसी नियंती ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पावर दे कंज्यूम द हीट जनरेटेड विल बी नेग्लिजिबल केवल रेजिस्टेंस जार अधिका फिलामेंट वायर जो गुड़ाक टंगस्टन फिलामेंट जार रेजिस्टेंस बहुत अधिका से गुड़ाक आमे ये करू सो भिन्न भिन्न मानक रेजिस्टिविटी लिखाई कंडक्टिविटी तार रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल हो कंडक्टिविटी कि दरकार नहीं एटा भी करदब इट इज वेरी सिंपल पाई आर स्क्वायर मेथड रे से गोटे पकई डायमीटर बढ़ई देले केते ये हला गोटे वायर को लंब अच्छा कहीं मोटा वायर रेजिस्टेंस कमी जाए बिकॉज मोटा वायर को भाव शह पतला वायर पैरेलल कनेक्शन है माने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टा बहुत कमी गला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कमी गला माने अल्टीमेट रेजिस्टेंस कमी गला तेणु मोटा वायर रेजिस्टेंस टा कम रादर कंडक्टेंस टा अधिका वी आर इंटरेस्टेड इन रेजिस्टेंस बढ़िले से यू नो तार एनर्जी अधिका प्रोड्यूस हम आई स्क्वायर आर टी अधिका हम से अधिका हीट दब अधिका लाइट जदि दिए एंड सो ऑन एटा गोटे देखिबो दीटा वायर भितर कंपैरिजन हेची से एका जिंस सिलिंड्रिकल डायमीटर देइची माने एठी 0.1/2 कले रेडियस पाई आर स्क्वायर कले बाहरिबो से अनुसार तुम कंपेयर करके कर दबो असाइनमेंट भी देइची ये गोटे गला देन एटा हमें मध्य डिस्कशन कर सारे तार ओरिजिनल फाइल गुड़ाक भी देवी पंक्ति संजोग ये संजोग ओडिया सब अच्छी आम कर सारे आउ तुम भाव रहा कौन कष्टिया अंक रहा कौन आगे आगे देखिए होता है क्या मुझे तुमको छाड़ी एटा सब बाएं हाथ का खाली एगुड़ा सब अच्छी प्रैक्टिस करने गुड़े देची प्रैक्टिस करने तार आंसर भी देची एटा तो आम करथिले क्लास रे आ समस्त आंसर ब्रैकेट रे लिखि देची सो ये गला 4 नंबर रे एठी एटा मते डिस्कशन कर देलेनी के कोटा कांस्टेंट रहिले कोटा वेरी करिवो कोटा कोन रहइबो ओटा सब डिस्कशन करके व्हाटेज पावर ओटा सब सरी देची फ्यूज कथा तो पढ़ दबो छोट पिला को ये आजिकल फ्यूज यूज होनी एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर गली पड़ुची एटा तांको टेकी देले पुणी हे जाउची आगुरु कोन आमे पिला बेले कोन बहुत दिन पर्यंत जो एमसीबी आसी नथिला आमे कोन कुलो चली गला लागे देखो ये फ्यूज देखो देखो ये को फ्यूज कटिछ आ गोटे तो फ्यूज तार लगाओ पुणी चलला लाइट एटा सब आमे पढ़ी सारलेनी ब्राइटनेस कथा पढ़ी सारलेनी तार भितरु अंक पड़िबो ए भी आर भी मध्य देइची सो संपूर्ण गोटे पैकेज किंतु जेहेतु भल पिला तेणु मु 7 दिन रु अधिका करूनी भावुची 6 दिन रे बंद कर देबी पचारिबा लास्ट को
समय कौच देखा षष्ठ दिन मत आप कहे मु ओपिनियन देवी किंतु ये आमर मिस्टर विस्मय त्रिपाठी कहते ना आम से अर्गानिक डाउट्स करवा अच्छा देखिए लास्ट को वर्तमान चल मु तुमको देखी कौन इंटरेस्टिंग गोटे अंक तुमको करेबी एटा तो पढ़ी सारी किर्चॉफ्स रूल टा मु कहि दउछि यूज हम बर्तमान current is conserved at any node माने गोटे सिंगल पॉइंट जो पॉइंट को करंट आसुची करंट जाउची so i1 plus i2 जदि एथि दीटा आसुची इज इक्वल टू i3 और i1 plus i2 आसिला गला होची माइनस इज इक्वल टू 0 किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ हला कोन किर्चॉफ्स के दीटा लॉ अछि गोटे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अछि सेतरे in any one closed loop anyone मझे गोटे लूप छाड़ दियो पछे गोटे कंप्लीट लूप थ्रू ए सेल ऑफ कॉम्प्लेक्स डायग्राम द सेल वोल्टेज जतिक अछि बैटरी दउची बैटरी जो ईएमएफ दउची मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस द एलिमेंट्स इन द सर्किट एटा बहुत इजी कर दबो तमर पाठटा को मल्टीपल सर्किट्स थिबो एमिति तादरे एमिति से गोटे गोटे इंडिविजुअल लूप को तमे जदि करिवो ता भीतर गोटे वोल्टेज थिबो ई दैट ई इज द सम ऑफ ऑल दी किंतु एया जदि जो करंट डायरेक्शन जो बाहरुची कोठु ना बैटरी रु से डायरेक्शन रे जदि थिबो करंट फ्लो करूथबो एक्चुअली करंट फ्लो करथबो जो जो फ्लो डायग्राम देखैथिबो जदि सेम डायरेक्शन रे जाउथबो देन नियाजिबो पॉजिटिव लिखाई छेठी if the sign of current hence the voltage passing through the resistor element is the same direction as the really current flowing out of the cell ru jota baharuchi mane plus ru bodoटा ru current baharibo छोटोटा रे पसिबो किंतु तमरो जो सर्किट डायग्राम रे अलगा देखौची तेणु सेटा नेगेटिव हबो जदि सेम डायरेक्शन देखुथिबो ताले पॉजिटिव हबो सेही अनुसार तमे ऐड करिवो तेणु धरो एटा गोटे सर्किट देइछि ताकू हम अप्लाई करबा ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई एटा एफ हवा कथा छाड़ो एठी मु पुनी डी कंप्लीट कर देइछि एठी एफ हवा कथा एनीवे जदि ए बी सी डी ऊपर लगेबा एटा को मारो गोली हम देखिबा 9 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट कारण डायरेक्शन से अछि एठी आकू देखो नै एटा भीतर बाहर को देखो जो देइछि एटा एमती 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 आछि एमती एमती जाइछि तेणु 9 वोल्ट सेम डायरेक्शन अछि सो पॉजिटिव हबो इज इक्वल टू 2 प्लस x प्लस 1 तेणु एटार निश्चित भाव में 6 वोल्ट एटा ए अननोन वोल्टेज विल बी 6 वोल्ट चलो टोटल टा को यूज करबा ए डी ई एफ एटा एफ हवा कथा ए डी टोटल टा को यूज करबा मझरे एटा बाईपास करबा तेणु देख 9 वोल्ट इज इक्वल टू 2 प्लस ए भी सीधा जाऊँगी प्लस 3 प्लस एटा अननोन देइछि वी बी प्लस 2 सीधा जाउ देखो एठी की मार्क करो 2 प्लस 1 सब गुडा को प्लस अछि एका डायरेक्शन जाउछि सो वी बी टा 1 वोल्ट सो एठू जणा गला एटा 1 वोल्ट तेणु आकू पकेवा दरकार नै गोटे लूप रे जेतिकी धर आउ गोटे ईएमएफ सोर्स थांता मझरे गोटे एठी आउ गोटे ईएमएफ सोर्स थांता जदि एका डायरेक्शन था ऐड कर दबो दीटा को वोल्टेज ऐड हबो जदि अपोजिट डायरेक्शन था माइनस हबो जोटा अधिका ता डायरेक्शन ता सेया रहइबो सो एटा गोटे सुंदर प्रॉब्लम आमे करबा एटा कलो देखिबा एटा मु तुमक पई छाड़ देछि एटा ड्रा करो तमे एटा करबा आ गोटे किर्चॉफ्स रूल टा कहबी ताकू यूज करी अंक करबा ड्रॉ करो तुम खातार ड्रॉ करो ये अंकटा फाइंड दिस फॉर द सर्किट डायग्राम डिटरमिन ए रे करंट इन द रेजिस्टर आर एंड द वैल्यू ऑफ आर सी रे होची ईएमएफ ई इफ द सर्किट इज ब्रोकन एट ए देन करंट थ्रू आर रे केते करंट जीवो आउ सेठी 28 वोल्ट ऊपरटा दे दीची आउ ईटा देइनी सो दीटा एठी बैटरी अछि
जदि बिगर लूप टाको लगेब 28 नहीं भितरटा बाईपास करदब ताहले जना पड़ी आग केसीएल यूज कर कारण एठी देई देई 4 एम्पियर करेंट जाउची एटा एठी 6 एम्पियर करेंट आसुची ताले जाउची केते करेंट आग जना पड़जिवो एठी आईटा केते जना पड़जिवो एठी सो लेट अस अप्लाई KCL to the node X एटी X करची किरचॉफ करंट लॉ यूज करिछि कोन द करंट इज कंजर्व्ड टोटल करंट आसीबो जेतिकी जीव सेतिकी सो आसुची केते ना एठी जाउची दीटा जाउची सो 6 इज इक्वल टू 4 प्लस आई आईटा केते बाहरला टू से चित्र चित्र रे देइछि एटा मु मन को मन चित्र करने से चित्र रे एटा देइथिला ता माने एई पटे जाउची गोटे पटु आसुची दी पटे जाउची सो 6 आसुची इज इक्वल टू जाउची 4 एंड आई एटा जणा नाही सो केसीएल माने पोटेशियम क्लोराइड नो किरचॉफ्स करंट लॉ यूज कले जणा पड़ी गला ए आईटा जोटा जाउची रेजिस्टर आर को सेटा जणा पड़ी गला इट इज 2 एम्पियर तो वर्तमान चलो केवीएल यूज करबा फॉर बिगर लूप लेट अस अप्लाई KVL VVL लगी देली छी 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 कौन चलची एठी मुन एबीसीडी ना दौनी हेले बिगर लूप लिखुची समय नाही कहले कौन हम बिगर लूप रे जदि अप्लाई करबा 28 इज इक्वल टू सेटा ई आ आसीबन सेतरे ईटा परे बार करबा स्मॉलर रे लगै करी बिगर केवीएल बिगर लूप रे लगले 28 इज इक्वल टू वोल्ट एठी जाउची एठी जाउची जो डायरेक्शन रे अछि वर्तमान आर वोल्टेज टा पॉजिटिव आसीबो 3 इंटू एटा 6 एम्पियर जाउची सो 3 इंटू 6 एटा प्लस आसीबो तापरे इयाडे जाउची एपटे आउ किछि नाही एटा को ए लूप टा को हमें नै ने सो एठी गला बेलु को करंट हे जाईची 2 एम्पियर एठी 2 एम्पियर जाउची सो 2 इंटू आर सेटा मध्य एका डायरेक्शन रे जाउची ये जो डायरेक्शन रे अछि एवं एठु जो बाहर छे एका डायरेक्शन रे जाउची ये भी प्लस किंतु सेठी गला बेलु को सेटा 2 एम्पियर हे जाउची सो प्लस 2 इंटू आर इज नॉट नोन तो एठु जना पड़ी गला रेजिस्टर रो रेजिस्टेंस केते आर टा इमीडिएटली जना पड़ी गला केते 28 बिजुक्त 18 बाई 2 5 ओम ओम कारनाथ रथे सो एठी जना पड़ी गला आर टा एठी 5 ओम तापरे पछे करंट करंट इन आर ऑलरेडी जानि सारलेनी ऑलरेडी 2 एम्पियर आईटा केसीएल यूज करके जानि सारलेनी करंट इन आर इज 2 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस भारला 5 ओम तो चलो तल लूप टा को यूज करबा यूज करके ईटा बाहर कर दबा तापरे ब्रेक डाउन करिगले कोन हो पछरे सी रे पछरे डी रे पछरे करबा सो केवीएल फॉर दी लोअर स्मॉलर लूप तलर स्मॉलर लूप को यूज करिया माउ एबीसीडी एफजीएच ना दउनी से दोथरे की ई अछि सो ई इज इक्वल टू ई पॉजिटिव अच्छी माने करंट रो डायरेक्शन अच्छी इट इज ठीक तो अच्छी तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन अच्छी 6 इंटू 3 टा से रहिबा एका 6 इंटू 3 प्लस एठी गला बेल को 4 एम्पियर देखौची से 4 इंटू 6 सी भी डायरेक्शन से अच्छी जो डायरेक्शन रे ईएमएफ सोर्स रु बाहर से डायरेक्शन रही 4 इंटू 6 आउ तो किसी नहीं तो ईटा केते बाहरला 18 जुक्त 24 केते 42 वोल्ट होची अननोन वोल्टेज एटा 42 वोल्ट एटा 5 ओम
आउ एटा 2 एम्पियर आउ तापरे कहूची जदि ए रे एठी ब्रेक कर दिया हला ता माने एठी किछि गला नाही पूरा पूरी मझी लाइन टा 0 हो गला सेठी आउ किछि डिवाइड हला नहीं से 6 एम्पियर टा पूरा गला 6 एम्पियर जो आस्थिला यारी सकाशे डिवाइड होतला तो सर्किट ही नहीं सर्किट ब्रेक हला माने नाही कहला माने माने नाही बिली कहबा माने 6 एम्पियर टा पूरा जाउची 2 एम्पियर नुहे हेले से पचारुची देन करंट थ्रू आर ताहले करंट थ्रू आर केते हबो केते हबो केते हबो जदि मझी लाइन टा नाही बिली भाबो एठी 6 एम्पियर देखौची ताहले से 6 एम्पियर जीवो तार V किछि by I. केते केते एठी कोन भाबुचो जे जेहेतु रेजिस्टेंस टा 5 एम्पियर बाहर लानी आई तो तो एठी तो जाउची 6 ताले असुविधा कोन होता तो किछि कैलकुलेशन नाही तार आंसर हो 6 ना कोन भाबुचो तुमे कोन भाबुचो पायो जाको आया सर आया मैडम कोन भाबुचो जदि ए रे ए पॉइंट रे काटी दिया जाए ताहले ए आर थ्रू रे केते करंट पास करिवो Sir, switch off. That's what I'm saying. See, I have previously I have also no 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 कहीं की 28 is equal to so oh, sorry I am so sorry मु से पे भावुतली something is going wrong 8 थिला पर हाँ हाँ जेतबे 80 इटा रहिलानी आउ एटी 6 आसीबनी या सकाशे मिसिकरी एपटू करंट सेपटू करंट मिसिकरी 6 आस्तला आई एम सो सॉरी मु तुमको मिसलीड कर देली तमे मध्य निज बुद्धि बाहर करी मते करेक्शन कलनी आई एम सो सॉरी ए ईटा 42 वोल्ट एटी 28 वोल्ट जदियो एटा पैरेलल कनेक्शन अछि दैट इज चेंजिंग द करंट जदि एटा रहिबनी ईटा इनफ्रक्चुअस हे जीवो ए मझी टा किछि काम दबनी तो करंट विल नॉट बी 6 एम्पियर तेणु आउ थे करंट बाहर करने पड़ो वी डू नॉट नो व्हाट इज द करंट तेणु करंट हैज टू बी फ्रेशली फाउंड आउट सो अगेन KVL for the larger loop no middle connection middle connection टा नहीं तो कौन है ताले 28 is equal to I is different 6 एम्पियर टू अलगा हो कारण सेठी ई आउ नाही 42 वोल्ट आउ नाही तेणु चलो लेट इट इज आई न्यू आई सो एठू आसिला ए जाउची आई इंटू 3 सो 28 is equal to I into 3 this is new I it लिख दे न्यू इंटू 3 से जाउची 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 जाई जाउची जाउची आउ तो किछि नाही आउ तो किछि नाही केवल I into 5 say I into 5 is equal to 28 आउ किछि नाही ये एपटे आउ किछि बंकेबार नाही सीधा से आईटा जाउची मु केडे बड़ भूल कली 6 को कर देली तमे बाध्य होइकरी जबरदस्ती कहले तमे भी कुंथौथिलो मु जानु छी किछि लोक कुंथौचो
किंतु कही पारुनो कि जानी पारुनो कोनटा भूल रोच सो ई नाही माने करंट विल बी डिफरेंट सो करंट को बाहर करिया पड़बो केते बाहरला 8i इज इक्वल टू 28 हेले i केते आसला अरे केते आसला मो अरे केते आसला Sir, 7/2. 3.5. Sir, 3.5. 3.5. एतिक तो 3.5 ना 2.5 कौन Sir, 3.5. 3.5. 3.5. बस एटा हला न्यू करंट दैट विल नाउ फ्लो थ्रू आर व्हेन देयर विल बी डिस्कनेक्शन एट पॉइंट ए बुझलो तो को माने बुझले हाते को केमती केवीएल केसीएल हम यूज करी प्रथमे केसीएल यूज करी कि करंट बाहर कर दले ए कंप्लीट ये रे जोठी ई थिला तेणु तापरे केवीएल होल लूप यूज करी करी हमें आर बाहर कले तापरे तळ यूज करी करी ई बाहर कले पुणी एटा काटिला परे होल पुटा यूज करी करी पुणी नुवा करंट यूज करी करी नुवा करंट बाहर कले जोटा एंटायर थ्रू दी सर्किट बुलिबो हला साई बुझिलो साई साई आज्ञा सर ओके आउ गोटे लास्ट तुमको किर्चॉफ्स रूल टा तुमको कहबी ना किर्चॉफ्स कोसमो ओहो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कथा कहबी देखो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल थ्रू रे आमे गोटे अननोन रेजिस्टेंस रो रेजिस्टेंस बाहर करू फॉर एग्जांपल आर टा ए आर टा गोटे अननोन रेजिस्टेंस जहा को आमे डिटरमिन करिया को चाहू पी क्यू आर नोन रेजिस्टेंसेस एवं एस इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस जोटा रियोस्टाट गोटे जंत्र अच्छी ताको स्लाइडिंग करी आमे जतिकी दरकार सेतिकी रेजिस्टेंस आमे चेंज करि परिबा ताको रियोस्टाट एठी गोटे कनेक्शन वायर कनेक्शन अच्छी एठी गोटे गाल्वानोमीटर लागि छि एवं रियोस्टाट एटा फिक्स्ड एटा गोटे अननोन से भी फिक्स्ड एवं एटा हम हाथ रे अच्छी आमे चेंज करी 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 तळ ऊपर सेटा गोटे स्लाइड करा जाए रियोस्टाट तुम देखिछ किए देखिछ रियोस्टाट लैबोरेटरी रे किए देखिछ से गोटे स्लाइडिंग थिबो गोटे एमती लंबा सिलिंड्रिकल ये रे स्लाइडर गोटे थिबो ताको धीरे धीरे स्लाइड कले एपटे सेपट कले रेजिस्टेंस चेंज हबो सो एमिति पोजीशन को आनो एमिति रेजिस्टेंस एस रो कर जेतले आ धीरे आ किछि करंट जीवो नै गाल्वानोमीटर जीरो देखैबो गाल्वानोमीटर नल रीडिंग दबो ए बाटरे किछि करंट जीव नाही से पर्यंत तुम एटा को ट्रायल एंड एरर रे रियोस्टाट को चेंज करू था कले कौन हबो ना बी आउ डी रो पोटेंशियल समान हे जीवो तेणु पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हेले देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट तो सही समय रे बी रो पोटेंशियल जेतिकी डी रो पोटेंशियल सेतिकी ता माने सी बी सी रो पोटेंशियल डिफरेंस जेतिकी सी डी रो पोटेंशियल डिफरेंस सेतिकी तेणु एटार पोटेंशियल जहा आर पोटेंशियल सेया तेणु सी रो पोटेंशियल आ गोटे अलगा तेणु बी सी रो डिफरेंस जहा डी सी रो डिफरेंस सेया राइट देखो स्टार्ट हला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी सी कहना बी डी रो पोटेंशियल समान आमे रियोस्टाट रे एभली भाव में एडजस्टमेंट करिछु एठी किछि करंट जाउ नै जो करंट आसुची सीधा एपट जाकी एपट पळे आसुची एपट जाकी एपट जाउची तेणु एठी i1 i2 मिसिले ये भी i1 हे गला आगुरु हेइ नथला एबे ये जा i1 ये भी i1 ये i2 मिसिकरी i हेकरी आसिला जो i जाइथिला सेही i अजा आसिलेनी हमें i3 देइतिले बुझेबा पई किंतु जतले नल कर देले गाल्वानोमीटर नल तले i1 i2 हेकरी i हेकरी आसिला तेणु वर्तमान कोन कले VBC ए आर पोटेंशियल डिफरेंस टा होची कोन IR नहीं i1 एटा को नहीं आगो आगो मु कहूची i1 जोटा जाउची एपोटू सेटा एक्जेक्टली से पटे जाउची एपटे किछि जाउनी i1 एटा भी i1 इज इक्वल टू v बाय r v होची केते v जो भीटा एंजॉय करूछंती बिकॉज ये पैरेलल कनेक्शन रे अछंती तेणु जो
voltage टा माने करूचंती तो सही सैया सो V बाई बिकॉज ये बर्तमान सीरीज कनेक्शन हो गला किसी जाऊनी करंट माने एटा सीरीज कनेक्शन हो गला मु कहूची ए टू सी भितर देख ए टू सी भितर देख ये किसी डिवाइड होनी तेणु सीरीज कनेक्शन आसीगला सो P प्लस क्यू आ वोल्टेज माने ड्र करुचंती V धर ये V जाउची सो V बाई पी क्यू एटा थाउ एटा मने रखि थाओ सेटा यूज हो पछरे जे आर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आर पोटेंशियल डिफरेंस वर्तमान आम एटा को सर्किट रो ए पार्ट टा को यूज करूचे आ जेहेतु वोल्टेज टा समान V सो V बाई P प्लस क्यू हूँ I1 तो I2 टा कौन ना से V बाई R प्लस S वर्तमान VBC एटा इज इक्वल टू कौन इज इक्वल टू I इंटू R I केते I1 इंटू R I1 हूँ V प्लस V बाई P प्लस क्यू V बाई P प्लस क्यू इंटू क्यू कारण आम केवल BC भितर पोटेंशियल डिफरेंस दउछि किंतु I1 ऑलरेडी बाहर कर सारलेनी तो I1 टा बाहर जी केते ना V बाई P प्लस क्यू V बाई P प्लस क्यू इंटू क्यू IR हेले बाहरला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C VBC तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VCD होची I2 इंटू रेजिस्टेंस S सो I2 टा बाहर ऑलरेडी V बाई R प्लस S इंटू S सो ये दीटा को समान इक्वेट कर देले आमे पाई गलु P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S एटा हला व्हिटस्टोन ब्रिज रो प्रिंसिपल P जानिचे Q जानिचे S रो वेरिएबल रेजिस्टेंस आमे करिक ऑलरेडी जानि सारलेनी सो अननोन रेजिस्टेंस टा भारी गला सो एबे को माने बुझिला हाते को इट्स वेरी सिंपल विश्वजीत हाथ केबे टेकिवनी से टोका हीरो मार का टोका है हला किछि नाही मो वेरी सिंपल तुम देखि दबो अच्छा गोटे अंक एठी देखो एई अंकटा मते गोटे पिला पचार थिला करि परिबोनी अनलेस यू अप्लाई व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एको करि परिबोनी हैंड्स डाउन देखो जेहेतु तमे देखो एटा गोटे व्हिटस्टोन ब्रिज देला हाइलाइट करछि सरला सरला जीवा ए ओ बी सी एटा 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 हूँ से कनेक्टिंग वायरटा एटा एटा जो करथुले कौन एटा करथुले P एटा Q एटा R एटा S करथुले जेहेतु P बाई Q 4 बाई 4 इज इक्वल टू 4 बाई 4 P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S ता माने एटा ऑप्टिकल ऑप्टिकल कहूँ गाल्वानोमीटर नल रे अच्छी ता माने एठी करेंटा जीरो आसुची निश्चय P बाई Q R एंड S जो डेटा देइछि से जो अन्य को डाटा दी था कि 4 2 एठी 4 2 से 4 P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S जदी हेई गला P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S हेई गला ता माने एई मझी कनेक्टिंग वायर रे जदिओ रेजिस्टर टा अच्छी किंतु करंट किछि आसुनी सेठी गाल्वानोमीटर थिला गाल्वानोमीटर भी रेजिस्टेंस अच्छी इटी रेजिस्टर टे देइछि त किछि करंट आसुनी सो CO रे I इज इक्वल टू 0 व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अनुसार सो वर्तमान कौन हैला सेटा को भूली गले ए दीटा वर्तमान मिसी गला एटा एटा सीरीज कनेक्शन एट तो करंट आसुनी सो P प्लस Q केते हला 4 प्लस 4 8 ओम वर्तमान ता संगे आउ गोटे 8 ओम लागिची आउ पुणी एटा हला SC प्लस CB आउ एटा R प्लस S AO प्लस OB इज इक्वल टू से 4 प्लस 4 एटा होची R प्लस S ये भी सीरीज कनेक्शन रे अछि 8 ओम किंतु ए दीटा आउ एटा ए तीनटा सीरीज पैरेलल कनेक्शन अछि एटा हला 8 ओम कोटा 4 प्लस R एटा 8 ओम आ गोटे तळे देछि 4 ओम से ए तीनटा जाक वर्तमान सीरीज कनेक्शन रे अछंती हैला
তবে এই পয়েন্ট এ এইটা, এটা পয়েন্ট বি এইটা, এইটা 8 ওহম, এই দুইটা মিশলা, এই পি এন্ড কিউ মিশিলা, এইটা আর এন্ড এস মিশিলা, কারণ আর কিছু রোল নাই, ସି ଓର କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଂ ୱେୟାର ଅଛି, କିଛି କିଛି ସେ କରେଣ୍ଟ କିଛି ନଉନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଲା 8 8 ଏଠି 4, ସୋ 1/r is equal to 1/8 plus 1/8 plus 1/4, 1 plus 1 plus 2/8 କେତେ ହେଲା? ସୋ r କେତେ ହେଲା? ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ହେଲା? 2। ସୋ এইটার ए बी पॉइंट रे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होची 2, जोटा आमे एठी करिचे, एठी तो कले आ गोटे जगह मु कोठी करिची, आउरी बहुत अंक को सिंप्लीफाई करा जायची, तुम देखिबो केसीएल केवीएल यूज करके। गोटे कोठी अछि ना, आमे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करवानी, सेटा करवा अगस्ट मासरे आमर सेटा गोटे हम कौन से परीक्षा परीक्षा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टा बहुत बढ़िया टॉपिक टा, गोटे कोठी मु करी, से देखुची आंसर केते हेतला। हाँ 80 हाँ ठीक। सो आजिकार कार्यक्रम को आम ये सांग कलु, बहुत धन्यवाद। आम काली करवा ना ना काली ऑफ कर दवा, समझित को मु सब आगे हाँ आगे सर काली करवा, काली गोटे डाउट क्लियर क्लास रखा कोटा सब सर सब। ओके, ताल काली गोटे क्लास करवा, दीटा करवानी हैला। आगे सर काली 6टा ରୁ 8ଟା जेती बाटे जीवो कोन। ओके ओके, विस्मय से आता, विस्मय तमरो ओपिनियन कोन? yes sir ओके रथे सेया सर stoichiometry ର POSI related question आसे कि? हैं कोन कहलो? stoichiometry ର POSI related question आसो कि? नहीं पीओएस रे आसीबनी क्वेश्चन, जदी कहबो तो मु काली डिस्कस कर देबी, जदी कहबो तो, किंतु हां सर सेटा डिस्कस कले जानिबो गोटे जिंस जे कोठी पीओएस रो उपादेयता बहुत अधिका, सेटा जानि नबो। ओके काली पीओएस कांसेप्ट ता संगे डाउट्स क्लियर संगे कह देबी हैला। सो काली करबा, बाय बाय।